वेलकम बैक ऑफ यू। मैं आपका दोस्त कीर्ति बोला फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके चाहिए प्रोग्राम डिजिटल मार्केटिंग में। यस माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसे हम लोग बात करने वाले हैं एग्जैक्टली एलिमेंटर। एग्जैक्टली हम लोग जो भी डाउनलोड किया था लास्ट अगर फिर रिमेंबर हम लोग ने इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल करके इनफैक्ट एक्टिवेट हम लोग जस्ट कर चुके हैं एलिमेंटर को, राइट। सो यस माय फ्रेंड्स, इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जैक्टली हाउ दैट लुक इन और हाउ दैट अपीयर एग्जैक्टली ऑन द पैनल एंड व्हाट एग्जैक्टली सेटिंग दैट वी हैव एक्चुअली एंड which is concerned with or which is related with Elementor, right? So we are just going to talk about all that features, my friend, in today's video. So later on in the from tomorrow's video, we are just going to start right and building the pages, post, right, all that thing that we're going to start from tomorrow. But today we are just going to talk about the features available with the Elementor. So for that thing, I just like to take you to the journey, my friends. So yes, my friend, that now just you can see here, this is nothing but this is actually nothing but the WordPress panel, right? This dashboard, and here in fact that we have a panel, and here we do have the last day in fact as we have downloaded Elementor. Wait. So yes, my friend, this is nothing but Elementor, right? In Elementor we have this all features, right? So that you can see here, right here. So यहाँ पर just हम लोग बात अभी करने वाले हैं, that is first, that is setting, role model, tools, system info, getting started. So that let's start with setting here. Setting say. So what exactly you get in setting, my friend? In general post tab, the what kind of post exactly, the post and pages, right, and landing pages, what exactly you want, right? So that you can just plan disable default colors in fact इसमें आप किस तरह से रखने चाहते हैं, what default fonts, right? Then I improve Elementor. यहाँ पे देखिए uses data sharing, अगर कुछ अगर चेंजेस इंटीग्रेशन के बारे में, अगर आपको कोई यहाँ पर कोई भी इनफैक्ट प्लगइन या फिर इनफैक्ट अगर आपको अगर टूल अगर आप को इंटीग्रेट कर रहे हो, सो दैट यू कैन राइट एपीआई की उसकी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। देन नेक्स्ट एडवांस CSS प्रिंट मैथड स्विच enable गूगल फॉन्ट लोड्स. So the next is Google font load, it is right, and load font awesome for support, load font awesome. So यहाँ पर जैसे आपको करना होगा डियर यस, बिकॉज यस एज आई सेड माय फ्रेंड, हमारी जो वेबसाइट होती है दैट एक्चुअली जो मेड अप ऑफ द ऑलमोस्ट फॉन्ट ओनली. सो फॉन्ट्स एक्जैक्टली थोड़ी स्टाइलिश होनी चाहिए. सो यहाँ पर मैं इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल माय फ्रेंड्स के लोड फॉर्म एग्जैक्ट जो ऑसम जो फॉन्ट जो होते हैं, सो काइंडली जस्ट अलाउ right Elementor to download right on behalf. So यहाँ पे in fact I'll just keep save changes here. So next we have something that is experiments, right? So Elementor experiments, my dear friends, यहाँ पर in fact यहाँ पे देखिए improve assets loading, improve CSS loading, additional यहाँ पे just देखिए stable optimized DM output, accessibility, import export, template, landing pages यहाँ पे देखिए, so that you can design. and यहाँ पे देखिए जो भी आपके experiments है, so that अगर एग्जांपल में जैसे आपको बताता हूँ, टॉप बार यहाँ पे देखिए एक्टिव है इनएक्टिव है, क्या एग्जैक्टली आप कब तक राइट अब तक आपने कहाँ तक इनफैक्ट आपको जो वेबसाइट अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, सो दैट एक्शन यू कैन सी, यू कैन मेंशन राइट, और यू कैन जस्ट चूज इट हियर. सो दिस विल शो व्हाट द एक्सपेरिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ Elementor that whether you have used or not. So this is actually that comes into the setting part. The next will go to the role manager. Yes, role management we might have found that will just talk about all the roles are given here, but यहाँ पर exact whom to give access, right, कौन सी राइट्स इनफैक्ट उनको देनी है क्या नहीं देनी है. सो दिस इज एक्चुअली अप टू यू, मतलब नो एक्सेस टू द एडिटर, वांट टू गिव एक्सेस ओनली टू द कंटेंट, राइट. सो यू कैन, अगर आपको नहीं देना है, सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस, राइट, रोल एक्सक्लूडेड, किसको देना है क्या नहीं देना है, राइट. सो दैट ऑल थिंग दैट माय डियर फ्रेंड्स यू विल हैव टू सेलेक्ट, राइट. सो वो आपको बाद में select just करना है, right, whether to give them access or not. If not, right, अगर किसी को देना है तो that you can save the changes here later on, right. Then next we'll just come to the tool में my dear friend, what, let's see, right, the tool में in fact जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए we have actually general place URL everything. So यहाँ पे देखिए जनरल में we actually have a CSS data syncing library safe mode. तो यहाँ पर इनफैक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है डियर. दैन यू रिप्लेस URL, येस यहाँ पर एक्जैक्टली जस्ट रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको आई वुड सजेस्ट माय फ्रेंड्स जस्ट एज आई सेड माय फ्रेंड, अगर आपको टोटल जो डेटा है, इफ़ यू जस्ट वांटेड टू कॉपी ऑल दैट डेटा एंड आपको इंटीग्रेट, अगर आपको डायरेक्टली टोटली अगर आपको सारा डेटा जो है आपको सेकंड जो इनफैक्ट जो नहीं अपने अगर आपने साइट है, अगर सारा डेटा इनफैक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है वहाँ पे, राइट. सो वो डेटा इनफैक्ट अगर आपको इंटीग्रेट
इंटीग्रेट करना है, सो ऑल दैट थिंग यहाँ पर ओल्ड आपकी वेबसाइट और यहाँ पर नई वेबसाइट, और डायरेक्टली यू कैन रिप्लेस ऑल दैट थिंग एट वंस ओनली. सो दैट इज एक्चुअली प्लस पॉइंट माय फ्रेंड दैट वी गेट हियर राइट ऑन एलिमेंटर. वर्जन कंट्रोल दैट वी डोंट नीड, यहाँ पर हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है. Maintenance mode, yes dear. अगर आप if you're working for yourself then it is okay, but if you're working for a new client, so यहाँ पर let me tell you my friend, ये जो choose जो मोड है मेंटेनेंस मोड, आपने कभी देखा होगा कि कोई प्रोफेशनल को बंदा है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी, अगर उन्होंने कोई वेबसाइट अगर अंडर वर्किंग प्रोग्रेस अगर चल रहा है, तो वहाँ पर जो वर्किंग प्रोग्रेस करके जो मोड जो आया हुआ है ना, स्टेटस एग्जैक्टली वो हम लोग जैसे सिलेक्ट करते हैं ना, दैट इट कम्स बेस्ड ऑन दैट ओनली. यहाँ पर देखिए कमिंग सून अगर आप यहाँ पर डाल दोगे तो फिर राइट लोगों को अच्छा लगेगा, बिकॉज इट इज़ यू आर वर्किंग फॉर द ब्रांड, और ब्रांड के लिए इनफैक्ट यू कैन नॉट डिसेबल इट राइट. आपको पैसे दिखाना है दैट इज यस इट इज़ वर्किंग प्रोग्रेस, या फिर कमिंग सून, या फिर मेंटेनेंस में है. सो दैट इज अप टू यू माय डियर फ्रेंड्स कि एक्जैक्टली आपको नेट पर एक्जैक्टली उस वेबसाइट के रिलेटेड कंसर्न आपको वहाँ पर क्या लोगों को मैसेज देना है. बिकॉज अगर वो फेमस हैं देन यू हैव टू वर्क ऑन व्हाट द कमिंग सून ओनली, या फिर अगर वो कुछ अगर मॉडिफिकेशन अगर कुछ अगर चलो तो यस मेंटेनेंस, अगर वो पर्सनल हैं तो यस यू कैन कीप डिसेबल नो मैटर नो वरी राइट. सो दैट इज अप टू यू माय डियर फ्रेंड्स दैट राइट हु कैन एक्सेस, कौन कौन इसमें एक्सेस कर सकता है. तो दैट इज यू कैन कस्टम डियर, यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द अबाउट पीपल, चूज अ टेम्पलेट फॉर दैट थिंग, कहाँ से सेलेक्ट करना है. इफ इट इज़ प्रो तो वहाँ पर होता ही है, नो वरी डियर. सो यू कैन लेटर ऑन यू कैन जस्ट सेव द चेंजेस डियर. सो दिस इज नथिंग बट दैट कम्स इनटू द टूल डियर. नाउ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दैट ऑलरेडी टोल्ड यू डियर राइट. आप सारे डेटा जो भी हैं दैट इजिली यू कैन import from the exported file from another website right, so that easily they can do right. The export template kit यहाँ पर देखिए start export start import. अगर आपको एक वेबसाइट से लेके अगर आपने डिज़ाइन की हुई है वर्डप्रेस में 2 वेबसाइट राइट, तो अगर आपको डेटा वहाँ से अगर आपको टोटली इंपोर्ट करना है, सो दैट इजीली यहाँ से जो अगर आपने एक्सपोर्ट किया हुआ जो डेटा है दैट यू कैन डाउनलोड ऑन योर PC या फिर आपके सिस्टम में, एंड देन यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम देयर राइट. सो दिस इज द वे माय डियर फ्रेंड दैट यू कैन import the data right. So this we done actually in Elementor. So यहाँ पर tool that I said system information, I think we don't need more information in that. So यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो right कौन से version क्या system पे in fact that works right. Then next we'll just talk about getting started, how to get started. वेलकम टू द एलिमेंटर. यहाँ पर इनफैक्ट इफ़ यू सी यहाँ पर देखिए गाइड के लिए इनफैक्ट दे हैव गिवन यू वीडियोस. सो यहाँ पर आप जस्ट देख सकते हैं दे हैव एक्चुअली गिवन यू 10 वीडियोस. सो अगर आपको समझना है ये राइट इन डिटेल्स, सो नो वरी माय डियर फ्रेंड्स. अगर आपको यहाँ पे सी अगर आप मैं तो यहाँ पर हुई हो डियर, यू कैन सी माई यू कैन फॉलो माई वीडियो एज वेल. अदरवाइज इफ यू आर comfortable with your language, English language, so kindly you can just go with that also. So whenever you get time my dear friend, 10 videos are there, so you can just study from this also right. So you can just start from there. Then next we actually have here next we'll just talk about how to get started, that I told you. Get help and right यहाँ पे just देखिए dear what help that you can expect. Welcome to the where answers are. So you can ask question regarding this all thing that it is mentioned my reference. These are nothing but the topic so that you can choose. But as I told you my friend, from tomorrow itself I'm just going to start this right. जहाँ से मैं start करूँगा and I'll let you know everything. Submission custom of you can in fact just go with the custom fonts icon. You can in fact download my friends. Custom codes are there. यहाँ पे देखिए custom font. Let's just see. ये देखिए डियर एड योर कस्टम फॉन्ट्स. इनफैक्ट आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं डियर राइट. यू कैन डाउनलोड यहाँ पे जस्ट देखिए. लेट मी शो यू. वो एक्चुअली एक प्रो में अवेलेबल डियर, नो वरी. सो यू कैन अपग्रेड, यू कैन डाउनलोड. ये हमारा फ्री है एग्जैक्टली राइट. ये बेसिक है, दिस इज नॉट अ प्रो. सो दैट्स द रीजन. कस्टम आइकन, कस्टम कोड, कस्टम फॉन्ट दैट यू कैन गो विद गो प्रो ओनली डियर राइट. आज जस्ट मैं इनफैक्ट जस्ट मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ डियर एंड टेम्पलेट्स राइट. इन टेम्पलेट इज अगेन पार्ट ऑफ योर एलिमेंटर ओनली डियर. हाउ कैन यू क्रिएट दैट राइट. सो मैं लेट मी टेल यू आई जस्ट गो विथ थीम बिल्डर डियर. थीम बिल्डर, हाउ कैन यू बिल्ड द थीम डियर राइट. थीम के अंदर what part come डियर. हेडर, फोटो, सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट, आर्चिव राइट, सर्च रिजल्ट पेज, प्रोडक्ट
राइट, फूड प्रोडक्ट आर्चिव 404 पेज, ये देखिए आपका हेडर, हाउ इट गोइंग टू अपीयर, फूटर, सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट, आर्चिव, राइट, प्रोडक्ट। सो यहाँ से इनफैक्ट हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड विल स्टार्ट वर्क ऑन दैट। हम लोग इसको अपग्रेड करना है एंड विल जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज एक्चुअली अबाउट व्हाट, यहाँ पे देखिए दिस इज थीम बिल्डर, आपकी थीम इस तरह से आएगी डियर, और इस तरह से इनफैक्ट आपको यहाँ पे पेज जस्ट आपको डाउनलोड करने डियर, आप पेज आप बिल्ड करोगे जस्ट बेस्ड ऑन दैट ओनली, राइट। और कहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सो दैट डोंट वरी, विल जस्ट सी इन द टुमारोज वीडियो, राइट। देन वी हैव another one that is nothing but the pop-ups. Pop-ups, let me tell you my dear friends, pop-up just आपको already just पता होगा that what exactly the pop-up exactly that depends, right। ये आपको डिज़ाइन करना होगा, right। डिज़ाइन करने के बाद ये pop-up exactly आपको कहाँ पर प्लेस करना है, whether that actually you know उसका जो प्लेसमेंट जो है that is actually depend upon the activity, action, behavior of the people on your site, right। या फिर आपको वीडियो या पोस्ट में इनफैक्ट the people they have just gone through your post, या अगर they are studying, right, तो उनको कहाँ पर इनफैक्ट वो पोस्ट उनको पॉपअप जो प्लेस करना है, राइट। जो भी वेबसाइट अगर देख रहा है तो 40% ऑलरेडी उन्होंने स्क्रॉल डाउन कर चुका है, तो आफ्टर वर्ड्स इफ़ यू वांट पॉपअप या इनफैक्ट डायरेक्टली टोटली वेबसाइट से बाहर निकल चुके हैं, वो टाइम को इनफैक्ट जस्ट प्लग इन, सॉरी आपको पॉपअप दिखाना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एग्जिट पॉपअप बोलते हैं। एंट्री इनफैक्ट जब ओपन करेंगे तभी इनफैक्ट हो जाना चाहिए, मिडिल में तब जो होना चाहिए, कोई एक्शन होने के बाद, साइन अप करने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद। सो दिस इज एक्चुअली अप टू यू माय फ्रेंड, सो दैट टेम्पलेट that also it really works. Then next my dear friends, next is saved pages, right, the saved templates. So saved templates my dear friend, जो भी templates आपने जो भी यहाँ पर बनाया हुआ है, that is the pages, the templates is available in the form of page or section, right। so जब भी in fact आप just बनाओ तो on whichever title, so that if you were just wanted to rework, right, so date wise, category wise, that you can save here, and later you can just start with that, right। आप अपना author type, what type of template that you're creating, page is, section, what exactly it is, so according to that you can just keep the record of that all, right। so this you can find on in saved templates only. So here's my friend, this is the rest of the thing that I hope my friend that with the help of when we are just going practically, जब भी हम लोग practically जाएंगे, that will be easy for me even to tell you that how it really function, how it really work, right। so this is actually all about the to-do video my friend. I hope you understood, and I am sure that you have enjoyed a lot, all right। so thanks for being with me here, thank you so much for being with me here my friends, and giving me this great support. So keep in touch, stay tuned, see you tomorrow, thank you.